हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जहां पर हम एमएससी फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स पेपर नंबर जो कि 2 है उसमें हम कंस्ट्रेंट मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं. सो होप यू लाइक इट. सो लेट्स स्टार्ट. A constraint motion is a motion which cannot proceed arbitrarily in any manner. Means that particle motion is restricted. For example, along some specific path is the simplest example of constraint motion. When a particle is made to slide on a wire, constraint required that the position of the bead lie on the wire. यानी कि उस पर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है कि जो बीड है वो वायर पर ही रोल करेगा, यानी कि वायर पर ही मूव करेगा. सो दैट मीन्स अ कंस्ट्रेंट. यानी कि किसी चीज़ पर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जाए कि वो इस डायरेक्शन में ही मूव करे, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रेंट. यानी कि कंस्ट्रेंट मोशन एक ऐसा मोशन है जिस पर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की है. So let us take an example. Let us take an example of constraint motion. So let us consider the motion of simple pendulum confined to move on a vertical plane. Here we need two coordinates x and y and polar coordinates r and theta with respect to the origin. To locate the position of the bob in the motion of the bob is not free but take place under a constraint motion that the distance L of the bob remains same for all the time. यानी कि O के लिए जो डिस्टेंस है जो बॉब का वो एक कंस्टेंट है, यानी कि जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो सेम रहेगी. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन and the equation of motion is x square plus y square is equal to L square, where L is the length of the pendulum. You can take also the example of rigid body. A rigid body is defined as a system of particles in which the relative distance of the constant particles are same. यानी कि जो रिजिड बॉडी होती है उसमें जो constant particle का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, यानी विद टाइम वो चेंज नहीं करता है. सो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कंस्ट्रेंट मोशन का. So let us take a look on the classification of the constraint. Here in this video I included only 4: scleronomic constraint, rheonomic, holonomic and non-holonomic constraint. If the constraint relation do not depend upon time, that constraint is called scleronomic constraint. Example, a rigid body. In rheonomic, if the constraint relation depend upon time, that relation is called rheonomic constraint. In this case, you can take the example of bead sliding on a moving wire. अगर एक ऐसा बीड है जो स्लाइड कर रहा है मूविंग वायर पर, तो rheonomic constraint का एग्जाम्पल है. In holonomic constraint, it independent of velocity, means that a relation can be made independent of velocity. Example, a cylinder rolling without sliding. So cylinder roll करता है without sliding. Example of holonomic constraint. But in non-holonomic, it is a irreducible function of velocity. And sphere rolling without sliding is an example of non-holonomic constraint. If you want a notification of all the videos, incoming videos, so please subscribe the channel and like, share also. So thanks for watching.